Okay, so for Be2H6, the hybridization is sp2s and sp2, and this compound is planar in nature. Anyways, whenever the hybridization is sp3, it is never planar. Whether it is sp2 or sp, it is going to be planar in nature. Okay, so again this is planar. The molecule is quite similar to B2H6 only. The two hydrogens are here at the center and one hydrogen here, one hydrogen here. Another example is BeH2 whole N. That means these groups are present, these molecules BeH2 are present for N number of times. Okay. So again, the type of center is, the type of bonding is, or bridging, you can say that, two center, three center, two electron bonds. Hybridization is again sp3, s and sp3. sp3 aa gaya, that means it is not going to be planar in nature, it will be non-planar. And what is happening here? N number of times these groups are attached to each other like this. Okay, so this will be the structure for n number of times. This will be a continuous cycle going on. So when we are talking about the bridging here, three center, two electrons, we're talking about like this. This is three center and two electrons are all together involved here. Okay, fine. Now, of course, this structure cannot be of infinite number. It is going to end at one way or the other way. Somewhere it is going to end. So at the end, again, it will be like this: BEH, BEH, and here it will be like this: H, BE, H, BE, and continuously. This will be for n number of times. So the bond formed here is two center, two electron. Okay, these which are present at the terminal. Rest will be three center, two electron only. So you can write down here all bonds except the extreme ends are three center, two electron bonds. Next example is Al2CH3 whole 6. Again, it is a type of three center, two electrons. Hybridization is sp3s, sp3, and again since it is sp3, it is going to be non-planar in nature. Let's draw the structure now. Structure is going to be like this: aluminium, aluminium, one carbon here, one carbon here, and CH3 here, CH3. So here you can see that it has carbon is forming 5 bond, and you know that carbon cannot form 5 bond. So this is not a proper covalent bond. Okay. So here also the number of electrons involved will be three centered and two electrons. So in this whole this area, these are three centers, two aluminum and one carbon, and two electrons are involved. You're moving around. Next we have Al2. Okay, so next example is of Al2C6H5 whole 6. Again, this is three center, two electron example. Hybridization is sp3, sp2, sp3. अभी sp3 आ गया है, तो again it is going to be non-planar in nature. तो कुछ भी नहीं है, instead of CH3 बीच में C6H5 लग जाएगा. Okay, you will have C6H5 यहाँ पे aluminium
Here you will have aluminum. Here C6H5, 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 and C6H5, like this. Okay. All are quite similar in nature, but आपको different examples याद मतलब ध्यान रखने पड़ेंगे. Then we have Al2Cl6. Again, this is your 3 center but 4 electron bond. ठीक है, ये तो सेम है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है. sp3 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 ये नॉर्मल बॉन्ड है. sp3 है तो it is going to be non planar in nature. Okay, so what is happening here? 2 aluminum is there. Here we have the chlorine. Now here one of the bond is dative bond. So what happens is these 2 electrons are involved, but along with that the lone pairs of chlorine is also involved, which is being given to this aluminum. So you will get this kind of bond here. The chlorine, यहाँ पे भी chlorine, यहाँ पे भी chlorine and यहाँ पे भी chlorine. Okay. अभी ड्राइविंग फोर्स क्या है कि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. सो 3p के बाद 3d ऑर्बिटल खाली है. ओके, और 3s2 की भी अगर आप बात करो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है. एक्साइटेड होकर ये ऊपर में चले जाएगा लाइक दिस. तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड इजीली फॉर्म कर सकता है और एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट हो. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि एल्यूमिनियम के पास ये जो p ऑर्बिटल है एक्साइटेड स्टेट होके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 2 electrons in 3s2, 1 electron in p orbital. excite होके ये इधर चले गया तो still you have 1 vacant orbital. तो जिसकी वजह से 6 electrons ही हैं. अगर एल्यूमिनियम, अगर हम Al के साथ बात करें, AlCl3, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. ऑक्टेट तो सबको कंप्लीट करने का मन करता है, तो इसी वजह से इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में दे देता है. सो यू कैन राइट डाउन हियर ड्राइविंग फोर्स is to complete the octet. ओके, एंड यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है. मतलब मेरे पास अगर 3 सेंटर है, मेरे पास अगर मैं इसमें अगर मैं नॉर्मली कोई भी बॉन्ड बनाऊं, मान लो मेरे पास है ए बी और ए, मैं इनके बीच में अगर बॉन्ड बना रही हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 4. और sorry guys, I don't know why the network is breaking so much. Okay, so as I was saying, अगर मेरे पास बॉन्ड बन रहा है ए बी और ए के बीच में, तो आई कैन सी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर 3 है, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड की तरह ही है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है कहीं भी. यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो होने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इन वन वे और द अदर वे. ओके, सो हियर द ड्राइविंग फोर्स इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट. Okay, and next point is only covalent bond, no electron efficient bond is present. जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स तो है ही एनीवेज. इसी की तरह सिमिलर एग्जांपल होगा यहीं पे Al2Br6. ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही, दोबारा ड्रॉ नहीं कर, सेम बनने वाला है एज Al2Cl6. Next example is Be2Cl4. This is again similar, 3 center 4 electron जितना नॉर्मल होना चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp3 sp3, सबका हाइब्रिडाइज. अब स्टेरिक नंबर निकाल के भी देखोगे तो sp3 ही आ रहा है. अगेन sp3 है तो कंपाउंड इज गोइंग टू बी नॉन प्लेनर इन नेचर. अभी बनता कैसे है ये? यहाँ पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को देता है इस तरीके से डेटिव बॉन्ड में. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे भी नहीं हो रही है.
ओके, ये इस तरीके का फॉर्म करता है जब क्या बन रहा है, डाइमर। डाइमर मतलब दो BeCl2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम बोल। So as I was saying, इसी का एक BeCl2 का पॉलीमेरिक फॉर्म भी होता है, n नंबर ऑफ टाइम्स में आप इसको लगा सकते हो। इन दिस इट इज बेसिकली इन सॉलिड फॉर्म। ये भी सेम 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3 जैसा होगा आपका नॉन प्लेनर। किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेगा, लाइक दिस। यहाँ पे भी आया बेरिलियम, सिमिलर जैसे ऊपर है, बट n नंबर ऑफ टाइम्स होने वाला है, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन draw it like this is n number of form, or you can say that this is polymeric form. Then we have I2Cl6. Again this is 3 center 4 electron, hybridization iodine involved है, so sp3d2 sp3 sp3d2, okay, and this is planar in nature. ये जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो लोन पेयर की वजह से आ रहा है एक्चुअली, और लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, इसीलिए कंपाउंड हमको कैसा दिखता है, प्लेनर। तो हमने यहाँ पे जैसे आयोडीन रखा, देन अगेन एक और आयोडीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, तो ये सिंपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं लाइक दिस। नो नथिंग, नो ड्रामा, सिंपल बॉन्ड फॉर्म करके दिल में लाइक दिस। यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, आयोडीन के भी 2 लोन पेयर होंगे, इसके भी खुद के 2 लोन पेयर होंगे। इट इज सिंपल काइंड ऑफ अ बॉन्ड, ये भी लोन पेयर होगा। तो इसलिए कंपाउंड यहाँ पे ये नहीं देखना है कि sp3 हो गया तो अभी ये भी नॉन प्लेनर होगा, नहीं। आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी कि लोन पेयर की पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किसकी वजह से आ रहा है, लोन पेयर की वजह से आ रहा है, और लोन पेयर को हम काउंट करते नहीं। तो okay, so as I was saying कि even though these lone pairs are present here, but still वो उसको हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, तो अगर वो आउट ऑफ प्लेन है भी तो उनकी ज्योमेट्री में वो इंक्लूड नहीं होगा। Then we have SnCl2 solid form. This is again 3 center 4 electron. Hybridization is sp3 sp3 sp3, and again it is a non-planar molecule. Structure is something like this. Okay, so somewhere in this particular manner these are joined together. This is basically a polymeric form. And again अगर आपसे पूछे कि ये कंपाउंड इस तरीके का formation like to complete their octet, draw this.
Done writing? Okay, everyone, writing is done. Okay. So the next topic is hydrogen bonding. Okay. So this type of bonding was basically discovered by uh, Hughes, Latimer and Rodbush. Of course, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है. Okay. So first write down. It was discovered by Hughes, Latimer and Rodbush. What is hydrogen bonding? When hydrogen is bonded to strongly electronegative element, and let's say that electronegative element is X. Okay, then they form a hydrogen bond. Next point, that in this only, the electron pair shared between two atoms moves far away hydrogen atom. As a result, write down and I'll explain you. As a result, the hydrogen atom becomes highly electropositive with respect to the other atom. Since there is a displacement of electrons towards X, the hydrogen acquires fractional positive charge. That is delta positive. While X attain fractional negative charge. That is delta negative. This results
in the formation of a polar molecule having electrostatic force of attraction, which can be represented as, का कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई हाइड्रोजन जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इट कैन बी यूजुअली फ्लोरीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दीज एलिमेंट्स उससे डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एक्स जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, बॉन्ड टूट नहीं रहा है, ध्यान रखना है, बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, बॉन्ड को बस अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब क्योंकि बॉन्ड को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच के वो एक्स के पास में ज्यादा ज्यादा शिफ्टेड रहेंगे। अब क्योंकि एक्स के पास में ये ज्यादा शिफ्टेड है, उसकी वजह से हैलोजन पे यहाँ पे क्या क्या आप डाल दोगे, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पे दिस इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा है तो उसके पास आ जाएगा डेल्टा। हम प्रॉपर पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ देयर इज अ पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब इसी तरीके से हमारे पास काफी सारा कंपाउंड प्रेजेंट होगा, इसके पास भी डेल्टा नेगेटिव, इसके पास भी डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी डेल्टा नेगेटिव, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑल टुगेदर ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर हो गया। और कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। मॉलिक्यूल पोलर हो गया मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। ओके, और यही जो हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, सिर्फ जो दो पोलर साइड्स बन जाते हैं मॉलिक्यूल के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर दैट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ में क्यों रहते हैं, ऐसे आप ऐसे फेंक दो तो सब अलग अलग क्यों नहीं हो जाते वाटर के मॉलिक्यूल्स। उसका रीजन यही है कि उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये है, हमको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे और भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में देयर विल बी this attractive force of attraction, and this is known as hydrogen bonding। और इसी की वजह से आपके पास जो वाटर है, दे आर एक्चुअली लिक्विड इन नेचर, है ना, वो सॉलिड की तरह बहुत पास भी नहीं है और गैसेस की तरह बहुत दूर भी नहीं है। ऐसे ही आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, डीएनए बायो वाले मतलब बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डीएनए के यहाँ पे बेसिस प्रेजेंट होते हैं ना, एडेनाइन गुआनाइन, डू यू नो पीपल ऑल दीज थिंग, डू यू नो, लेट मी नो। So that is actually in bases के बीच में जो bonding होती है, that is nothing but hydrogen bonding. Okay, so for sustain, so that life can sustain, hydrogen bonding is very important. Okay, so is this clear to everyone? Let me know. Okay, so next topic is main conditions for hydrogen bonding। कौन से कंडीशन है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करेगा, जरूरी नहीं है कि हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस कर जाए। सो फर्स्ट इज hydrogen should be covalently bonded with high electronegative element। ठीक है,
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे, FON। तो फोन करके आप याद रखो कि हाइड्रोजन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पे लाइक यही 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। ठीक है, साइज स्मॉल होना चाहिए ना, आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर few of the elements which are quite small. तो अगर मैं ये बोलूँ कि decreasing order of atomic size, इन तीनों में से atomic size का decreasing order क्या है, सबसे ज्यादा साइज नाइट्रोजन का होता है, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का। तो अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे यहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो कैसा होगा, ऑफ कोर्स फ्लोरीन का भी ज्यादा है, देन ऑक्सीजन का होगा, देन नाइट्रोजन का। फॉर दैट मैटर मैं वैल्यू भी बता देती हूँ, ये 3.0, 3.5 and for fluorine it is 4. This is the electronegativity value. Okay, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट, ओके, उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यू कैन राइट डाउन हियर strength of hydrogen bond is directly proportional to electronegativity of element and inversely proportional to atomic size of, write down this, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर विल बी स्टिल फ्यू केसेस जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस करेगा, एंड दैट इज योर HCN। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs in HCN due to triple bond between carbon and nitrogen। तो एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ओके, तो ब्रैकेट में लिख दो sp hybridization। sp hybridization है तो it is quite electronegative in nature, so electronegativity of carbon and nitrogen increases, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। we'll have here HC triple bond N, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, like not on carbon, basically on nitrogen। yeah, दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन CN, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो तरीके के होंगे। फर्स्ट इज योर intermolecular hydrogen bond and second one is your intramolecular hydrogen bond। okay, now what does this inter and intra means? inter का मतलब जो बॉन्ड है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा, और इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आई विल टेल यू हाउ। okay, intermolecular can further be divided into two types, that is homomolecular
इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर. Fine. So now we'll be talking about these individually. So first one is intermolecular hydrogen bond. In this item, hydrogen bond formed between two or more molecules of either same or different compounds is known as intermolecular hydrogen bond. ओके, तो हमने इसमें दो पार्ट्स पढ़े थे. एक तो है होमो इंटरनो. होमो का हमेशा मीनिंग ही समझना है, बायो वाले बच्चों को ज्यादा आइडिया होगा. होमो का मतलब ही होता है सेम. इट विल ऑलवेज बी सेम. So it is homo intermolecular. So hydrogen bond between molecules of same compounds. सेम कंपाउंड्स के बीच में अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल वाटर. से मेरे पास ये है वाटर. इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड कर रहा है. दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस तरीके से लाइक कंटिन्यूअसली चलते रहेगा लाइक दिस. तो सेम ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देन देयर इज HF. हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव. तो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा लाइक दिस कंटिन्यूअसली. Like this. This is your HOMO. Another example we can take is for boric acid. बोरिक एसिड काफी डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री देता है, जो आपको मतलब मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट देख के आपको पता होना चाहिए कैसा होता है. इसे याद करने का जरूरत है नहीं ऑल टुगेदर. दिस इज बोरिक एसिड H3BO3 लाइक दिस. अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा O, यहाँ पे H, एंड दूसरा कहीं से दूसरी तरफ से H आ रहा होगा. उसके साथ ये यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. यहाँ पे इसका खुद का एक हाइड्रोजन है. देन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कर रहा है इसका ऑक्सीजन लाइक दिस. बोरॉन, ऑक्सीजन किसी और के साथ कर रहा होगा. यहाँ पे इधर इसका खुद का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका खुद का हाइड्रोजन है, एंड ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा. इस तरीके से पूरा सर्कुलर वे में चलता है. ओके, नीड नॉट टू राइट दिस होल बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बट दिस इज हाउ इट विल फॉर्म दी
हाइड्रोजन बॉन्ड. आई होप यू गॉट द आइडिया. सो थोड़ा सा इसको इसी फॉर्म में ड्रॉ कर लो. Done. In this, write down, in the solid state, BP OH होल थ्राइस को यूजुअली इस तरीके से भी लिख देते हैं कई बार बोरिक एसिड को. ठीक है. सो in solid state, the boric acid, that is BOH whole thrice units, are hydrogen bonded into two-dimensional sheets with almost hexagonal symmetry. Layered at quite large distance, apart, that is 3.18 angstrom. ओके. सो कहने का क्या मतलब है, आप अगर आप इसको पूरा ड्रॉ करोगे ना तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा पूरा. प्रॉपरली अगर ड्रॉ करोगे तो ये हेक्सागन टाइप का दिखता है. तो एज्यूम कर लो कि ये एक शीट है, ये एक हेक्सागन की शीट है, फिर एक और हेक्सागन की शीट है, एक और हेक्सागन की शीट है. तो इस तरीके से ये लेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? गॉट इट एवरीवन? हाँ, यस यस लिख दो. Similarly like graphite. Dotted line is hydrogen bonding, Sampada. It's not a proper bond. That's why I have drawn this dotted line only. If I want to show a bond which is not proper, there is only some force of attraction, then it is a dotted line. So I've shown it here in this way. Krish, what portion you have to write? First of all, tell me, then I'll scroll up. Type of hydrogen bond. Okay. लिखो जल्दी से. Okay. Now, second type is heteronuclear. Hetero intermolecular. अब
होमो का मतलब सेम होता है तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट होगा। अब एवरीवन नोज कि अल्कोहल और वाटर को आप इजीली डिसॉल्व कर सकते हो, तो वो कैसे डिसॉल्व होते हैं? अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन molecules of different hydrogen bond between the molecules of sentence को गड़बड़ लग रहा है ना, different compounds कर दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH इस तरीके से। देन आई हैव वाटर, ये वाटर है। अल्कोहल के हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डॉटेड लाइन से क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल ले लो अल्कोहल का, एक और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। सो दिस इज नोन एज हेटेरो इंटर मॉलिक्यूल, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको हम हेटेरो बोल देंगे। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज होमो। बी पार्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन दिस राइट डाउन इट टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। तो आई शो यू द एग्जांपल। This type of hydrogen bonding takes place within the molecule. In this case, first write down hydrogen bonded with electronegative elements of a functional group form hydrogen bond with another electronegative element present on nearest position on the same molecule। अभी लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। Second point, this type of hydrogen bond mostly occurs in organic compound। Third point, this result in this results in ring formation। और कहीं भी इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं चिलेशन। That process is known as chelation. This is just the name. Okay. Now next is necessary conditions for the formation of intramolecular hydrogen bonding. First condition is the ring formed as a
result of hydrogen bonding should be planar. Second, a 5 or 6 member ring should be formed. And third, interacting atoms should be placed in such a way that there is minimum strain during the ring formation. लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ. Done writing? Okay, like, so now whatever they're saying is, I'll be explaining you with the help of example. Okay, let's say I have this one benzene ring, this type of group, and it has OH group attached to it. And along with that, it has NO2 group attached to it. NO2 group is like this. अभी what is gonna happen? इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव. तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है. अच्छा, अब ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनाओगे तो रिंग जो फॉर्म हो रहा है वो या तो 5 बनेगा या तो 6 बनेगा, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, क्योंकि अदरवाइज एंगल स्ट्रेन काफी पड़ जाता है. जैसे मान लो अगर आप कोई 3 मेंबर्ड रिंग बना रहे हो, मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे CH2 एंड CH2, ये रिंग बनी हुई है. आपको पता है कि ये कार्बन का स्टेरिक नंबर 4 है, तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कितना होने वाला है? sp3. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109. बट अगर मैं इसको 3 मेंबर्ड रिंग को देखूं, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री. तो वो बेचारा 109 बनना चाहता है. ओके, एंड जबरदस्ती आप उसको क्या कर रहे हो? 60 डिग्री पे रख रहे हो, तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है उसके ऊपर. इसीलिए कभी भी हम 3 डिग्री और ऐसी 4 डिग्री की अगर आप बात कर लो, तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट बॉन्ड एंगल 90 है. तो यहाँ पे भी काफी स्ट्रेन पड़ रहा है. 107 होना चाहिए बट पड़ रहा है 90. बट अगर मैं 5 मेंबर्ड रिंग ले लूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर के हिसाब से sp3 होता है 109 होना चाहिए, बट इसका समवेयर बॉन्ड एंगल कुछ 105 होता है. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो बहुत एंगल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए इफ यू हैव दिस 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग अगर आप बना रहे हो, तो देयर इज वेरी लेस एंगल स्ट्रेन. तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है. तो
दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अब इसको दूसरे और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, खुद ही के अंदर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल 1, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। और ये जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं चिलेशन, ये ध्यान रखना है। ओके, सपोज मेरे पास है एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, नाम थोड़ा भी भयानक लग रहा होगा, बट जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सब इजी लगेगा। तो कंपाउंड जो होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस कर जाती है। ओके, देन देयर इज अनदर एग्जांपल, say per sulfate ion, that is HSO5 माइनस। तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे O माइनस होता है, आयन है माइनस चार्ज, तो ये यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से फॉर्म करेगा। ओके, यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। यहाँ पे बेंजीन होता है, बेंजीन पे इस तरीके से OH लगा होता है और यहाँ पे एक फ्लोरीन होता है। इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे नोट डाल के एक चीज लिखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग provides extra stability to the molecule। अगर किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। राइट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। In this, write down the strength of hydrogen bond is usually very low, usually 5 to 10 kilojoules per mole के equal होता है, but in some cases this value may be as high as 50 kilojoules per mole। तो usually 5 और 10 के बीच में ही होगा, but there are few cases where the strength of these hydrogen bond increases to 50 kilojoules per mole। The strongest hydrogen bonds are formed by फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए उससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ज्यादा होती है। ओके, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो दैट विल बी हाइड्रोजन। इवन अगर हाइड्रोजन से भी ज्यादा कंपेयर करें तो ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसके साथ ज्यादा एफिशिएंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। नेक्स्ट लिख लो, ड्यूटेरियम is more electropositive than hydrogen, therefore
also form stronger bonds. Next point, the strength of hydrogen bond can be compared by the relative bond energies and the geometry of the various compounds are given below. ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज याद नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैं F माइनस और HF के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करूँ, फॉर्म्स F H और F, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, बाकी ये नॉर्मल बॉन्ड है। इसके बीच का एनर्जी होता है समवेयर अराउंड -161 प्लस माइनस किलो जाउल्स पर प्लस माइनस 6 किलो जाउल्स, मतलब 6 वैल्यू ऊपर नीचे आप घटा सकते हो। अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड हो, ये एक एसीटोन है, ओके। इसका अगर हम HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएं, इट विल फॉर्म इनके बीच का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड का -46 kilojoules per mole. So all these are quite strong hydrogen bonds. वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे इट इज -25 kilojoules पर, और जो HCN है उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होता है समवेयर अराउंड -12 kilojoules पर। ओके, राइट ऑन दिस। वैल्यू याद नहीं करनी है, बट ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Next point, write down the magnitude of hydrogen bonding depends on the physical state of the compounds. ना फिजिकल स्टेट पे भी उस पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड is maximum in the solid state and minimum in the gaseous state. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड्स का ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ओके। अब अगर हमें कंपेयर करना है, जो कॉमन एग्जांपल आप ऑब्जर्व करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है OH और नाइट्रोजन के बीच में, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा इंस्टेड एज कंपेयर टू OH और
O के बीच में। देन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है अगेन लाइक दिस, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसके साथ फिर अनदर नाइट्रोजन, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है एज कंपेयर टू, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन पे जितना के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब सेम केस यहाँ पे भी है, तो ये चीज तो सेम ही है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन यू हैव व्हाट, ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। तो इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, आपने ये नाइट्रोजन लिया, इधर डेल्टा नेगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे नाइट्रोजन के साथ कर रहा है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स उसका यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। एंड देन यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, बट इतना अच्छे से पुल नहीं करेगा जितना अच्छे से ऑक्सीजन पुल करता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। लिखो ये, डन राइटिंग। ओके फाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो स्ट्रक्चर होता है HF का, वो zigzag फॉर्म में होता है, जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया था लाइक दिस। फिर चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे लिख लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF link is in zigzag form in both solid and लिक्विड स्टेट। ठीक है, गैशियस स्टेट में तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाते, बट सॉलिड और गैशियस स्टेट में होगा तो दे विल हैव zigzag स्ट्रक्चर। राइट डाउन दिस।